Today we will discuss about auxin and cytokinin. These two topics are very important for our coming NEET exam. So do focus, okay? So auxin are synthesized in growing apices of plant. That means shoot tip and developing seeds. जो न्यू सीड्स जो जर्मिनेशन हो रहा हो उस टाइप की सीड में एंड शूट की टिप में ये ऑक्सिन सिंथेसाइज होते हैं. एंड साइटोकाइनिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये मेनली ऑकर्स इन रूट बट ऑल्सो ऑकर्स इन दी ग्रोइंग एम्ब्रायो दैट मीन्स डिवाइडिंग सेल में. एंड द साइटोकाइनिन ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एंडोस्पर्म यानी कोकोनट मिल्क, और it also present in tomato juice. So auxin and cytokinin, these two plant growth hormone, they are antagonistic in nature. Auxin and cytokinin hormone, they are antagonistic in nature. Why antagonistic? Because their function are opposite. Auxin induces apical dominance. ऑक्सिन का काम क्या है? एपिकल डोमिनेंस का काम है. एंड साइटोकाइनिन ये क्या करते हैं? इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस. ऑक्सिन इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस. दैट मीन्स जो एपिकल या टर्मिनल बार्ड्स है ना, वो रिमेन डोमिनेंट एंड इट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बार्ड्स. दैट मीन्स जो एपिकल बार्ड्स है ना, सिर्फ वही ग्रो करेंगे, वही डोमिनेंट रहेंगे. And this auxin, that's why the auxin is responsible for both phototrophic and geotrophic growth of a plant. क्योंकि only the apical portion, only the apical bars, they are remain dominant in growth. That means वो ऊपर की तरफ भी जाएंगे और नीचे की तरफ भी आएंगे. Phototrophic growth and geotrophic growth. एंड साइटोकाइनिन ये क्या करते हैं? इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस. दैट मीन्स जो एपिकल डोमिनेंस है ना, उसको ये चेक करेंगे. बट इट ऑल्सो इनिशिएट्स द रूटिंग. एंड cytokinin, when you spray the cytokinin hormone, then it promotes the lateral shoot growth. And cytokinin is also responsible for induction of cell division. Okay, now we will discuss with example. Auxin are actually the indole compound, and the example of natural auxin are indole 3 acetic acid and indole butyric acid. And the example of synthetic auxin are 2,4-dichlorophenolic acetic and naphthalene acetic acid. And one more point I want to quote you, that 2,4-dichlorophenolic acetic acid and indole 3 acetic acid, they are acting as weedicides. Okay, and this weedicide, this is very important. It generally acts in the NEET exam. So do remember this one, these two. 2,4-D, which is a synthetic auxin, and IAA, that means indole 3 acetic acid, which is a natural auxin. These two auxin are acting as weedicides. And again, this indole 3 acetic acid, they are synthesized from they can be synthesized from tryptophan or adenine compound, or it can be synthesized from carotenoid derivatives of carotenoid compound. Okay, and lastly, few more points that are also important and that are being asked in the competitive exam, like anti-auxin. What is anti-auxin? All those compounds that inhibits the action of auxin, they are anti-auxin compound. And these compounds are P&CB, that means para-chlorophenoxy isobutyric acid, and TIBA.
You should remember this example. This is generally asked. And lastly, auxin precursor. Auxin precursor क्या है? Auxin precursor, actually they are the raw materials that are required to the initial synthesis of auxin. Okay. And secondly, we will discuss about cytokinin. So cytokinin is isolated from herring sperm DNA. Cytokinin is first isolated from herring sperm DNA. एंड साइटोकाइनिन का मेन जो फंक्शन है ना वो क्या है? इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस, इट चेक्स द एपिकल डोमिनेंस, इट सप्रेस द एपिकल डोमिनेंस. साइटोकाइनिन की स्प्रे करने से ये क्या क्या होते हैं? ओनली इट प्रमोट्स द लेटरल शूट ग्रोथ, एपिकल ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं. इट ओनली प्रमोट्स द लेटरल शूट ग्रोथ. एंड वन मोर थिंग that is generally being asked कि apical dominance can be overcome by two methods. एक तो साइटोकाइनिन को स्प्रे कर दो, एपिकल डोमिनेंस खत्म होंगे एंड इट विल प्रमोट लेटरल ग्रोथ. एंड अनदर, अगर एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करना है देन वी हैव टू रिमूव द एपिकल या टर्मिनल बर्ड्स, एंड दिस आर जनरली प्रैक्टिस इन द टी गार्डन. या राइट, उसमें क्या होता है? जो एपिकल बर्ड्स है ना उसको काट दिया जाता है. एंड देन दैट मीन्स वी आर अलोइंग ओनली द लेटरल बर्ड्स टू ग्रो. एंड उससे क्या होता है? इट फॉर्म्स अ बुशी अपीयरेंस. दैट मीन्स वो लेटरल साइड में सिर्फ ग्रो होते हैं. एंड लाइक द नेचुरली ऑकरिंग cytokinin. The example of naturally occurring cytokinin are zeatin, and this zeatin are extracted from the zea maize, and this was first explained by Latham scientist. And synthetic the example of synthetic cytokinin are kinetin and benzyl adenine. तो बेंजाइल एडेनिन इसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स द सेल डिवीजन and it promotes the fruit richness. And one more function of auxin is like in a culture medium na, in addition to auxin, cytokinin are also being applied to obtain a good callus. In culture medium auxin के साथ cytokinin भी दिया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग गुड कैलस. एंड कैलस क्या है? कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ स्केच डायग्राम. ओके, सपोज ये साइंटिस्ट स्कूग एंड मिलर, इसने क्या किया कि कल्चरल मीडियम में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसने जब बढ़ाया तो उसमें क्या हुआ कि रूटिंग स्टार्ट हो गया. कल्चर मीडियम में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसने बढ़ाया तो प्लांट्स वो सीड में ना रूटिंग आ गया, वो बेबी प्लांट में. एंड उसने फिर से दूसरा कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखा, उससे उसको ये पता चला कि उसमें शूटिंग स्टार्ट हो रहा है, वो पहला प्लांट में शूटिंग आ गया. तो दैट मीन्स ऑक्सीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग एंड साइटोकाइनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शूटिंग. Yeah, cytokinin, cyto shooting, right? They are a little bit synonyms. Yeah, cyto shooting. So this is a tricky explanation that I'm giving you. Okay. Now cytokinin, actually cytokinin also delays the leaf senescence process. Why cytokinin delays the leaf senescence process? Yeah, senescence is the aging process, and cytokinin bole it delays the aging process. Why? Because actually while we are giving cytokinin, that means we are stimulating both differentiation and outgrowth of auxiliary bud. That means while we provide cytokinin to any plant, that means we are stimulating the auxiliary
but growth. That means we are promoting, that means we are stimulating the auxiliary BARD की differentiation, yeah, outgrowth को उसको हम promote करते हैं. That's why ना we are delaying the lip senescence process. Thank you, and please do subscribe my channel. Okay.